जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बंसी वाले तेरा शुक्रिया 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 बंसी वाले तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 बंसी वाले तेरा शुक्रिया 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 बंसी वाले तेरा शुक्रिया 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 बंसी वाले तेरा 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 शुक्रिया सावन आए बादल छाए शुक्रिया शुक्रिया बंसी वाले तेरा शुक्रिया 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 बंसी वाले तेरा शुक्रिया
बताएं कैसे हो भाई अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपको। और काम वाम कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा अभी? पूछ रहे काम वाम कुछ बढ़ा कि नहीं अभी? वैसे कम है, हाँ बिल्कुल, हम लोग के पास बिल्कुल है कम है, समझो ना के बराबर है बिल्कुल। लाइन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और चाय नाश्ता हो गया शाम को? नहीं अभी? अच्छा, किसी दिन मुलाकात करते हैं यार, काफी साल हो गए मुलाकात किए हो तुमसे। हाँ, कहते आते जाते हो, मुलाकात नहीं होती है। बात तो होती रोज है, मैसेज होते हैं, लेकिन हमारे पास गाड़ी है वो वाली बैटरी वाली, लेकिन भीड़ भाड़ में नहीं जाते हो आते कहीं। काफी साल हो गए मुलाकात नहीं हुई आपसे। हाँ, फोन पे रोज बात होती है, इसलिए किसी दिन निकाले टाइम थोड़ा। उस दिन वो लेडीजें दोनों आई थी, बड़ी तारीफ कर रही थी आपकी। यहाँ नई लेडीज एक मोटी पतली सी गई होगी आपके पास। बताया जरन सारी जी गई थी दो लेडीजें, एक मोटी थी एक पतली थी। यहाँ बहुत तारीफ कर रही थी आपकी दोनों लेडीजें। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई अजहर अंसारी जी आपका। हाँ, शुक्रिया 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 बंशी वाले तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया बंशी वाले तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया बंशी वाले तेरा शुक्रिया। बोलो यार भाई कैसे हो? कमेंट रुक गए यार। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया।
जब जब होई धर्म के रिहानी, बाढ़ई असुर अजर अभिमानी। जब जब होई धर्म के रिहानी, बाढ़ई असुर अजर अभिमानी। एक बार के काज माही, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो, लक्ष्मण राम भजो सिया हो, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। राम सिया राम जय जय राम, लक्ष्मी राम सिया जय राम, सिया राम लक्ष्मी कहाँ से हमारे जाना। आपकी बैटरी मिल रही नहीं कहा पैंतीस 43 29 27 पैंतीस 43 27 ये लोग भी याद नहीं टाइम कितना
43 वाला कितना? 27 नहीं यार, रिचार्ज में खत्म हो गया इनका। रिचार्ज खत्म हो गया। इसमें साला ये होता है, जैसे हमारा 4 बजे रिचार्ज तो 4 बजे खत्म होगा। तो जियो का होता है कि पूरा दिन चला देता है 9 बजे। इसमें नहीं चलाता। इसमें अगर आपको 12 बजे हो तो 12 बजे। एयरटेल है। हाँ, आज 12 तारीख। साढ़े 4 बजे। हाँ, चाचा आएंगे। पूरे दिन बैटरी पड़ता है तो फिर काम अलार्म मिल जाए। काम आ रहा है ये तो 24 किलो लगा। अब आप महंगा हो गया, खाने में मजा नहीं। हाँ, 50 रुपये किलो हुआ। तो भाई दूध का लेंगे तो बंद। वो बचा, वो टेस्ट भी नहीं है। चलो भाई, एक किलो लिया तो 3 बोतल है, 3 बोतल मिक्स करके लिया। खाया कोई मजा नहीं है ना उसमें। अब आम का टेस्ट खत्म। सफेद आम तो थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है, वो भी पूरा मजा नहीं है। वो नहीं गर्मी जैसे अभी गर्मी पड़ी तो देखी तो
लक्ष्मण राम भज सिया हो।
राम सिया राम जय जय राम। वतन कहाँ सिया मरे जाना, और हादसा बताओ, आराम नहीं है। मौसम बन रहा है। बादल मतलब वो या वो छड़ी दे रहे हो नीचे वो टेलर जैसे नहीं वो बोर्ड चौकोर बना लीजिए ना तो उससे टिक जाती है। नहीं अब पैर काम नहीं कर पाएगा, पैर फिसल सकता है ना। दुकान तरफ देखा 2 दिन से बंद है कुछ।
देखो कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ले घुमा करता है लड़का उनका। हाँ हाँ, दूसरी गाड़ी, कल तीसरी बड़ी गाड़ी है। शैम्पू नहीं है आज? शैम्पू देखो घर का है, मंगा देंगे। 10 मंगा देना, 10। शाम को देखो, 10 मंगा देना। 4-5 से आगे पड़ेगा। नमस्ते। कटी सटी हाँ कट गई। और जा रहे थे निकल के तो हमने कहा ले ले। तुम कह रहे थे कि भूल गई कहाँ? नहीं भूल नहीं गया, सुबह बारिश होने लगी, कल आ नहीं पाए। छोटी वाली बाजू में एडमिट थी, तो आज इनकी छुट्टी होके घर आई, तो हम फिर आज घर गए देखने। उसी में दौड़ा धूपी में कहीं मन। क्या हो गया भाभी? अरे उनका हृदय में
सिया राम जय जय राम। बारिश हो गई है। वो तो गए हैं? देख लो इलाज करने आया बाबा फटी पटंग लाए बन जाएगा। बढ़िया है भैया। और गाड़ी वाड़ी बढ़ा रहे होगा। हाँ क्या है? ऐसे यार थोड़ा मान है एक। हाँ अच्छा माने हो। शुक्ला जी नहीं आए, कब तक आ रहे हैं अभी? अच्छा बहुत डर लगा था भैया। कहाँ के कहाँ है? बाहर हैं टूर ही कहीं। हाँ बहुत डर लगा था यार। 8-10 दिन हो गए। क्या कि वो कोनो चीज का समझा था नहीं है। वो तो काफी दे दो। वीडियो दे दो और गाड़ी आ गई तो काफी। आज ही जेब में पड़ी है काफी चाहिए। मास्टर साहब नहीं है हम नहीं है। उनका यहाँ एक बात वो नहीं रहा था। तो उनके सच में बैठे में यहाँ
पैसे पैसे दिलाओ पैसे 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 सिलाई दिलाओ पैसे। अभी रुक जा, हम दे देंगे। लाइट लाइट आए तो चाहिए। पैसे ले अरे नहीं रखो इसे। ले, अरे ले लो, तो दिक्कत का है। हाँ। लाइट यार पिछले लाइट नहीं ना। लाइट आ जाए तब सिल जाएगी, जा। है ना, अभी लाइट नहीं है, लाइट आ जाए तब सिल जाएगी। है वहीं रखी, डाल दो। हाँ, पैसा पापा दे दो, तुम गिरा दोगे। हाँ ला सौंधी यार दे दो, खा के बुला। पैसे ला सौंधी यार दे दो। तो साले जब आते हो हम 1 रुपया जोड़ रहे हो। लाइट तो आए। हाँ ले ले आप, ले खाओ। जाओ, हम मत लेना। हटो हटो हटो। हाँ बोले, बता क्या गा रहा है, अभी गाय का दूध है। हाँ तो सोंधी हर चल रही है। हाँ कहाँ कौन। हाँ नहीं तो पैसे कहाँ है यार इसमें भी हम लोगों को। इसमें नहीं आता पैसे हैं। टाइम में नहीं हो पा रहा पूरा। वाच टाइम नहीं हो पा रहा। हम्म। वो अभी कहाँ है क्या वो। नहीं हम देख रहे कैसे हैं। लगते हैं यार। वो तीनों है, के बाप इनको तमीज है ना जरा सी। जैसे हमें तुम पैसे डाल देते थे तुम्हारे ऐसे थोड़े बताते कि हाँ भैया पैसे दे रहे हैं। बचपना भी इनके अंदर है ना।
बताएं कैसे हो यश सैगल जी? यस जी, बताएं कैसे हो यश सैगल जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस जी, बताएं कैसे हो? कहाँ से हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, कल्याणपुर से कानपुर में। कानपुर कल्याणपुर। हम भी कानपुर से हैं ना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कानपुर कल्याणपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव स्टेशन कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे हैं। हम कल्याणपुर से हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। आपका भी चैनल है? यस जी, हाँ जी, कल्याणपुर कानपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं? बताएं सर, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं? पीना है कोल्ड ड्रिंक? पीनी है कोल्ड ड्रिंक? अच्छा, आप हमारी लाइव में आए हैं पहले हमें तक अभी? हम लोग को समझ गए जब कोल्ड ड्रिंक नाम लिया, हम जान गए थे। ये आईडी कब बनाई तुमने? और कौशल बाबू? बोलो क्या हो रहा है इस समय? एक आते हैं आपके लाइव में ऐसे, कौशल कौशल नाम है उनका, बड़े चौराहा से, वही बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ खाएं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाथ जोड़कर धन्यवाद आपको।
अरे आपने आए अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका समय देने के लिए। आजकल सबसे कीमती समय है आदमी का। हाँ चलो चलो। शर्ट बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। शर्ट बना रहे हैं जी। आप बड़े चौराहा से हैं और कहीं से? कानपुर बड़े चौराहा से आप? आज पहली बार आप लाइव में आए हमारे यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। यस जी, हाँ हैं, पहले कभी आए लाइव में, आज काफ़ी दिन बाद आए हैं आप। कौन घूमने गया? छः बजे तक आ रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं। अभी तक तो आएंगे नहीं, टाइम लगेगा। एक बार समय पर किसी को करेगा।
बताएं बहन कैसे हो, क्या हो रहा? कल सुबह, आज सुबह देखा था वीडियो हमने ज्योतिपाल जी आपका। बताएं ऋतुपाल जी क्या हो रहा है इस समय? प्रिंटिंग ड्रॉप प्रिंटिंग अभी नहीं सिले, अभी सिलेंगे। मौसम खराब था, पानी कौन पिएगा ऐसे मौसम में? ये हम भी बैठे तो हैं। अच्छा, आपका घर देखा था वीडियो में। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया बात ऋतुपाल जी। हम तो परेशान है मौसम में, पता नहीं कहाँ से परेशानी। हाँ देखा था। वही सपना बहन वाला हाल है। आए नहीं जाते ना, नहीं टाइम मिला होगा। सपना बहन कैसे हाल है? अच्छा, हम लोग तो मार्केट चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं। आदमी बीमार ना होता हो तो बीमार हो जाए, घर में रह रहे कैद हो जाए। चिड़िया समझो एक तरह से आप लोगों को, चिड़िया हैं। सही बात, सही बात। अभी अच्छी होते सब जगह घूमते हैं। भगवान कभी कभी बड़ा मिस्टेक हो जाता है भगवान से। लड़कों का भी यही हाल है। हमारा भतीजा आता है, सपना बहन का अनुराग में है, वो भी ऐसे है। हाँ, सारा दिन घर में रहता है। हम कहते लाइव आया करो तो कहते हैं चाचा कैसे लाइव आए हैं। आर्टिस्ट अनुराग है उसके चैनल का नाम है। मेरा भतीजा है वो भी आपके जैसे है। हाँ सही बात, सही बात। आपको बचपन से ही दिक्कत थी कि अभी हो गई है? हमको तो अभी हो गई दिक्कत। सिलाई भी कैसे सीखी आपने?
आए भैया ऋतुपाल। सिलाई कैसे सीखी, कौन सिखाया, कहीं सीखने जाती थी आप? IIT गया। अच्छा, हमको तभी हुआ है 4-5 साल पहले। तो सिलाई कैसे सीखा आपने यहाँ, कहीं गए हो कि सीखने के लिए? हाँ आगे नहीं गया। चलो आए आए सही बात। चलो दिमाग तेज है, अच्छी बात है। वही दिमाग थोड़ा इसमें लगा दो तो आप थोड़ा दिमाग इसमें भी लगा देना, यूट्यूब में भी। अभी मोबाइल कितने हज़ार का है तुम्हारे पास? सही बात। ऐसे करते करते सीख जाता है, ऐसे यूट्यूब पे सीख जाओगे आप। हाँ, यूट्यूब में सीख जाओगे, सपना पहनता आपको सब लोग जानेंगे, सब लोग होगा, फिर दुनिया निकल पड़ोगे एक दिन बाहर। हाँ, अगर वही दिमाग आप उसमें लगा दोगे। हाँ, जितना सिलाई सीखने में दिमाग लगाया है बहन, वही दिमाग इसमें लगा दो। हाँ, चाबी चाबी ले लेंगे बाबा ले लेंगे, नहीं रखी कौन अरे आटा के को पास हो जाए। अब इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको कहिए खा गई रखने से खाया कर बाहर क्या होगा। आपको सिलाई करते हुए कैसा साल हो गया? आ जल्दी अब अपनी सहेली से नमस्ते बोले थे? हाँ, लेकिन मोबाइल में सब पढ़ाई का काम है बहन। हाँ, मेहनत कर लेना, इसमें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो, इसमें चाहेंगे, भगवान चाहेंगे तो आपके सब सारे काम बन जाएंगे। हम ये देखो डिजाइनदार काट रहे हैं शर्ट हम।
अच्छा, चलो इसमें सब दिन बदल जाएंगे आपके। अब देखो सब लोग जानने लगे कि नहीं आपको सिलाई में कोई नहीं जानता था, हाँ है कि नहीं सही बात। सिलाई अपने घर में करती रहती, कोई नहीं पूछता आपको, हाँ। चलो बढ़िया है, मेहनत करते रहो, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, हाँ। ज़िंदगी में कोई काम हम कोशिश ज़रूर करो, हाँ। कहाँ तक पहुँच गया है? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। किसकी सैलरी? नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया। 200 रुपया घर से ले आए थे मम्मी से। हाँ, हो गया। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बस। मेहनत करते रहोगे ना, साल 1.5 साल, बहुत मेहनत है इसमें, हाँ। कई हज़ार का है मोबाइल आपके पास? अच्छे, चलो बढ़िया है, करे हो, यूट्यूब भी करते रहना, तीनों काम करते रहो, धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ा नाम होगा बहन आपका, हाँ। हमारे यहाँ तुम्हारी भाभी पार्लर खोले हैं, ब्यूटी पार्लर सिलाई चलाते हैं भाभी तुम्हारी, तभी घर का खर्चा चलता। थोड़ा बहुत हम कर लेते, थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं। शहरों में पार्लर में बहुत पैसा है, हाँ। हमारा शहर है, हाँ। ऐसे ले लिए तैयार होने के लिए आया करती है, हाँ। थोड़ा बहुत और सीखो, हाँ। कहते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, हाँ। बिल्कुल मेहनत करो, हाँ। नहीं नहीं, सिलाई नहीं करते, सही बात, बहुत हिम्मत की बात है, हाँ। तेरी की बहुत मेहनत, वैसे ऐसे मेहनत करोगे ना, इसमें पैसा बहुत है यूट्यूब में, हाँ। अगर मेहनत कर लिया आपने, हाँ। अब देखो सपना बहन खाली 1.5-2 घंटे सुबह, दोपहर 1.5-2 घंटे बात करती हैं,
मेहनत करती हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बिना मेहनत कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये ऐसे ही मेहनत बहन यूट्यूब में कर देना ना, तो सब लोग तुमको जानने लगे कि सब बढ़िया काम हो जाएगा, आपके दिन बदल जाएंगे। अपने फ्रेंड से नमस्ते बोली थी हमारे। बता ऋतुपाल। बताएं यश जी। बढ़िया है, कटिंग कर रहे हैं। कटिंग बताई थी, कटिंग। सीख लो, आप भी सीख लो, आपको बता देंगे हम। आप भी सिलाई सीख लो। हाँ, बताइए जी, क्या सीखना है आपको? दूध लेके ले जाएंगे पड़ेगा, क्या बचेगा? कमर हो गया। अच्छा, राधे राधे अनुराग। और बताओ अनुराग, कैसे हो? बारिश हुआ कि नहीं हुआ अनुराग आज? और मम्मी पापा बढ़िया हैं सब घर में? राधे 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 राधे। बढ़िया है, बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है।
हाँ जी, यस जी, कस्टमर आ गए थे। राधे 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 राधे। राम सिया राम सिया राम जय लखन का सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हाँ अनुराग देखो, रितु बहन जी ऊपर नहीं आर्टिस्ट अनुराग लिखा है, हाँ इसका भी चैनल सब्सक्राइब करना। अनुराग जो नहीं लिखा आर्टिस्ट अनुराग, हाँ यही हमारे भतीजे हैं। इनको ज्वाइन करवा लेना। लॉन्ग वीडियो में देख के इनके वीडियो में कमेंट कर दिया करना, हाँ कि आनंद भैया ने कहा है, फिर ये तुमको कर देंगे। हाँ अभी है नहीं, अभी चले गए वो, तुम नहीं थी। हाँ ऐसे उनके वीडियो पे कमेंट कर दो, नए वीडियो पर। हाँ आर्टिस्ट अनुराग भतीजे हैं हमारे। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे आईडी आप लिख लो या याद कर लो। ये देखो लिखा आर्टिस्ट अनुराग कुशवाहा। अरे रमेश तो पूछा तो वो कह रहे तब ऐसे भी होता है। उनके वीडियो में कमेंट कर दो, उनको कह दो हमको हमारा भी चैनल सब्सक्राइब करो, करेंगे। हम आते हैं रोज़ लाइव में, मेरी भतीजे हैं हमारे। आर्टिस्ट अनुराग कुशवाहा, वो भी तुम्हारे जैसे सामान के लिए घर में बैठे रहते हैं, बैठे बैठे आर्ट के वीडियो बनाते हैं। वो तो सिलाई भी नहीं सीखे, बिना ब्लॉग भी हो जाता है। अभी आप थे नहीं, अभी आए थे वो, अब कल नहीं तो कल आएंगे। हाँ तब फिर देंगे ब्लॉग। अभी अभी गए हैं वो अनुराग। नहीं ब्लू तो दे दे, लेकिन वो है नहीं ना अभी। अच्छा आपके लिए ब्लू दे दे। हाँ हम भी पढ़े कम है ना। हाँ आपकी तरह है। हम दूसरी दूर थे, हमसे उनसे 100 किलोमीटर दूरी है।
कल आओगे ना लाइव आप, कल आप करा देंगे बस। वो तो मामा के लड़के हैं मेरे, वो हाँ, हमारे सगे भतीजे नहीं हैं। वो बहुत दूर रहते हैं, हमसे 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। कानपुर सुना, हम कानपुर में रहते हैं। बताया ऋतुपाल, कानपुर सुना तुमने? ऑर्डर डाला ही नहीं तुमने? और कोई 11 बजे? हाँ, अभी आओ, कितनी देर में आ रहे हो? भूल भुलैया सैया अखियाँ तेरी, मैं तो रास्ता भूल गई, मेरे जंग जंग। राधे राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अमित भैया कैसे हो? और ज्वाइन हो गए कि नहीं अभी ड्यूटी वगैरह? ज्वाइनिंग हो गई कि नहीं अभी? वही बताएं अमित भैया, ज्वाइनिंग वगैरह हो गई कि नहीं हुई अभी आप? बढ़िया है, बहुत अच्छी बात, आप लाइव में आए, बहुत खुशी की बात हुई। वो पेंशन काम के लिए देख कह रहे थे, देखना अगर अच्छा अच्छा अच्छा। चलो चलो, भगवान भोलेनाथ आपको इस महीने में कर दे, सावन भर में, बहुत अच्छी बात है। हाँ,
अच्छा अच्छा अच्छा। तो यही लखनऊ में होगी ट्रेनिंग की बाहर कहीं जाना पड़ेगा आपको? सहूलियत हो जाती है। हाँ। पूछ रहे हैं यही लखनऊ में होगी? हैं? तो हम क्या करेंगे बताओ? नहीं नहीं, पूरा आशीर्वाद है, बड़ी खुशी है, बहुत बहुत। बाबा भोलेनाथ इस महीने में। यही दिक्कतें होती अच्छी हैं। बात है, अच्छी बात बस इंतजार करें हम शाम को। है। लखनऊ कौन से मोहल्ले में आपका मकान रहते हैं आप लखनऊ में? ये चीज़ है। हमारी बहन का मकान बना उधर लखनऊ बिजनौर तरफ, हाँ, CRPF कैंप, हाँ। हमारा आधा गांव लखनऊ में है, हाँ। अच्छा अच्छा, आप चौक में रहते हो, हाँ। वो लोग लखनऊ बाहर रहते, इधर नहीं, बिजनौर तरफ CRPF कैंप, हाँ। जब आपका देखो बंदा है, पहुंच गया है, कुछ बता रहा है। तो यहाँ लखनऊ बहुत पहले से आप लोग रह रहे होगे, आपकी फैमिली सब? अच्छा अच्छा, वहीं पर रहते हो लोग, हैं। हाँ। इतने लोगों में सबसे करीब आप निकले हैं यूट्यूब की दुनिया में, हाँ। सपना बहन तो बहुत दूर है। जीतू भाई बहुत दूर है। अच्छा अच्छा। हम्म। और एक भतीजा है हमारा, वहीं प्लॉटिंग का काम करते हैं गांव के लखनऊ में। सही बात, मिल सकते हैं। बाकी सब लोग बहुत दूर हैं, मिलना भी चाहिए कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। आज सुबह सपना बहन सब लोग थे, बात में कह रहे थे आपसे, कितने लोगों में सबसे पास आप ही लोग हो बस। हमारा गांव तो लखनऊ पड़ता है, लेकिन हम रहते कानपुर में हैं, हाँ। कानपुर LMCO है जहाँ, हाँ जरूर आएंगे। हमारे गांव बहुत लोग, अक्सर करके हमारे मित्र हैं, वो ऑटो चलाते हैं, हाँ। वो हमसे खूब कहते चलो हम तुमको ले चले लखनऊ, हाँ। हाँ, LMCO के पास ही हम लोग रहते हैं, हाँ। LMCO सब निर्माण बनाता है ना, हाथ पैर, व्हील चेयर, ये सब, हाँ। उसमें जितने लोग हैं सब सपना बहन के जैसे ही हैं, कहीं कोई किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, कहीं कुछ है, हाँ। LMCO में सब यही होता है काम, हाँ। व्हील चेयर है, बैटरी वाली गाड़ी है, ये सब बनती है। तो हम लोग रहते कानपुर में हैं, गांव मेरा मतलब वहीं उन्नाव में है। सही बात। हम अपना ये टेलर काम करें, भाभी तुम्हारी वो भी अपना ब्यूटी पार्लर सिलाई काम करें, एक लड़का है मेरे यहाँ, तो उतनी दिक्कत भी नहीं होती हम लोगों को, हाँ। बड़ी फैमिली, तीन लोग हैं, पहले माता जी थी, इस पर हो गए 3 लोग बच्चे हैं।
सही बात। 5 साल से हमको हो गई प्रॉब्लम। हाँ, पहले सही थे बिल्कुल। हाँ, अब भी है, काम कर लेते हैं। आप लोग मिल गए, थोड़ा अच्छा लगने लगा है। हाँ, बात करके। जीतू भाई, सपना बहन है, आप हैं। ऐसे लोगों से कम आदमी लोग बात करते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। हाँ, भतीजा इंटर में है आपकी? हाँ, अब और आगे भगवान चाहेंगे इंटर कर लेगा तो कुछ ना कुछ। पढ़ाया उसको सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाया था। हाँ, उसमें लाया था, हाई स्कूल में लाया था 94%। तभी कह रहा कि बहुत कम आए मेरे यहाँ, रो रहा था इतने परसेंट के बाद। है, मेहनत करता बहुत, देखता है ना, मतलब कि हाँ, फीस भी सब ज़्यादा थी, लेकिन अकेला था इसीलिए वो सब मैनेज हो गया है। नब्बे करीब तो ला ही ले आएगा। हाँ, आजकल सब नंबरों की पढ़ाई है। हाँ, कौन कितनी मेहनत करता है, कैसे करता है। वो हमारा पेंशन वाला देख रहे हैं, अगर कोई आदमी हो तो हमारी पेंशन नहीं बन पाई। आपके संपर्क में है। हमने फार्म भरा था कैफे से, तो उसके बाद वो रुक गया। हाँ, अब दोबारा अप्लाई भी नहीं हो पाता है वो। आप लोग पेंशन मिलती नहीं मिलती है? हाँ, पता नहीं उसमें क्या प्रोसेस हो गया, क्या रुक गया वो। अब दोबारा फार्म भी नहीं भर सकते क्योंकि वो रुका पड़ा है ना। अच्छा, हमारा सब वो बस वाला पास बन गया है मेरा। यही बन गया, फिर अप्लाई किया, उसके बाद रुक गया है। एक लोगों को दे रखा कागज, जो कह रहे हैं होगा होगा, पैसे भी दे दिए थे उनको 1000 रुपये, उसके बावजूद भी नहीं बन पाया। हाँ, बात करना आप उससे। हाँ हाँ, वो तो बनी है। हाँ, सीताराम जी, राधे राधे। वो आईडी बनी है बस वाली। वो बन गई है, वो सर्टिफिकेट बन गया था मेरा वो
50% का। हाँ, बताएं सीताराम मिस्त्री जी कैसे हो? सीताराम जी कहाँ पे चल रहा काम हम आपका? हाँ, कोई कह रहा था विकास भवन जाओ, कोई कह रहा था वहाँ जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ जाए यार, किसी टेंशन में। और सब बढ़िया अमित? आप स्कूटी से अकेले चले जाते नहीं चले जाते? हमारे पास वही बैटरी वाली गाड़ी है, वो भी थोड़ा बहुत जाते जाते रोडें ख़राब होती नहीं चल जा पाती। चलो बढ़िया रहे बस। सपना बहन भी अगर कोशिश करती तो उनका भी कहीं न कहीं हो सकता था, लेकिन उनको लाले ले जाने वाली दिक्कत है। और जो अगर टाइम नहीं लगे, अगर जाके अगर मन कर जाए तो तुम्हारी बनी सब्जी रखती है, वो आके दुकान से बाप बेटा दोनों इसके लिए समझता है। सही बात, सही बात। बालाजी तो है, बापे है नहीं, ज्यादा का डर नहीं, बापे भी आई बहुत दिक्कत हो रही है। सही बात। अब मीठी खाए कैसे? जो एक खाली हाई फुल करेगा तो अमाउंट होगा। इलेक्ट्रॉल मंगाएगा रख लो तो उन्हों के चक्कर में नहीं कौन लगा, तो रोज भूल के पी लगती सुबह चाय रोज नहीं तो कोई चीज नहीं करे। मतलब जब तुम सोचो कि कोई दवा के तौर पर कोई चीज मंगाएगा रख लो, तुम नगर नहीं जाता साकल लगा के फिर निकालते तो पूरा खुद शरबत बनाएगी वही मंगा के रख देते ये बोली हुआ ना। सही बात। बहुत बहुत सही बात। हमें बता कर हम कुछ मेंबरशिप भी सब कुछ नहीं सीखते, लेकिन उसकी बहन के प्यार में सब सीख गए। हाँ हो गया, यही दुकान में सब हो जाता है।
कटिंग कर रहे थे कपड़ों की। पावर किया बाहर और सरकारी जहाँ उससे से ला रही है तो उससे से 30 रुपया के 2 रुपया दिया तो उसमें 30 रुपया मिला वो हमें 28 रुपया दी मतलब 28 का सारा हमारे खा रहे हैं बाकी शुगर सुबह के साथ तो पहले हम खाते जब हमारे सही बात। हम खुद नहीं कुछ जानते नहीं क्या होता क्या नहीं होता है, लेकिन एक दिन सोचा है तब चैनल बना दिया लड़के ने है। सर्दी भर दोनों भी परेशान कर सर्दी भर हमको कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी, जैसी गर्मी पड़ती वैसे शुगर अपना पावर शुगर दिखा तो किसान दूसरी तुरंत दिखाने लगा। आप लोग बड़ा सपोर्ट करते भाई बहन का, वो बढ़िया जाएगा जीतू भाई भी करते, आप लोग सब सभी लोग। हाँ हमारे घर के आदमी लगा था तो समझता है कि अब लड़का का ये मालूम है अब ये साथ छिड़न लगे सही बात वाला था कभी एक अलग दुनिया हो जाती है इसकी। यहाँ यूट्यूब की दुनिया एक अलग दुनिया हो जाती है, अलग दोस्त हो जाते हैं। गर्मी के साथ हमारी बहन जो है कह रही थी भैया भी काफ़ी दिन बाद फ़ोन किया है, आप लोग का सपना बहन है, ऐसे करके बहुत लोग मतलब उसकी दुनिया दूसरी हो जाती है। आदमी है उन लोगों से बात किया करता है। काफ़ी लोग हैं मतलब जो यूट्यूब की दुनिया में दोस्त बन गए हैं। हाँ जो हकीकत वाले दोस्त थे हम लोग साथ वाले वो सब छूट गए। क्या हमारे वो लोग कभी फ़ोन नहीं करते ना हम लोग फ़ोन करते हैं। जो यूट्यूब वाले हैं वो रोज़ उनका नोटिफिकेशन आ रहा है, हेलो है हो रही, बातचीत होती है। सही बात सही बात। अब इसके पहले हम लोग उनसे बात करते, वो लोग बात करते थे, अब वो लोग कभी बात ही नहीं करते ना कभी हम करें ऑनलाइन। सही बात। कहाँ कहाँ जुड़ जाते हैं। अब अभी आपसे वो बहन जुड़ी थी, हाँ जो सपना पहनते ना है वो ऋतु पाल। हाँ वो भी बहन उन्हीं तरह है। ऐसे आज सुबह जीतू भाई से बात हो रही थी तो हमने कहा लखनऊ में आना, सुनीता बहन पहले कानपुर आना, तो जीतू भाई कहते कि अमित भाई भी लेके आना पड़ेगा। नहीं शरीर पड़ रहा तो बता पा भूख लगती नहीं, हमें एक रोटी से ज़्यादा पूरा दिन हो जाए अंदर ऋतु बहन भी ऐसी है। हाँ अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। हाँ आपसे पहले उसी से बात हो रही थी। हाँ हमसे कहने लगी भैया इनके चैनल में सपना बहन सब ऐसे ही लोग आते हैं। हमने कहा 75% ऐसे लोग हैं। वो हमारा भतीजा आता है अनुराग, हाँ सपना बहन के, वो भी है सपना बहन जैसे है। हाँ जरूर आती है वो।
देखो दीपावली में सोच रहे हैं जीतू भाई को बुलाने के लिए यहाँ, लेकिन कह रहे सपना बहन नहीं आ पाएगी यहाँ। सुनीता बहन कह रही थी, आज सुबह बात हुई थी, आप नहीं थे, सब लोग थे बाकी यहाँ, तो कि लखनऊ में मिलेंगे सब लोग यहाँ। दीपावली के चौथे दिन जवानी से ऐसी खाए सबकी शॉप भी बंद रहती, सबकी बच्चों की छुट्टी रहती, स्कूल बंद रहते, ऑफिस सब बंद रहते, तभी को रखा हमने यहाँ। सबसे कम खराब। अब इधर 3 लोग हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, सपना बहन हो गई, आप हो गए, बाकी सब लोग दूर दूर हैं यहाँ। हमारा गांव लखनऊ सबसे पास 40 किलोमीटर है। हाँ जीतू भाई कह रहे थे, देखो हाँ बात करेंगे हाँ। सुनीता बहन भी बहुत अच्छी है वो हम हमारे विषय में नहीं जानती थी कि हैंडीकैप है यह, परसों बात हुई तब। अच्छा हम बाइक से चले जाते, कोई बैठा के हमको ले जाता है, तो फिर कोई साथ चले जाते हैं, या पर्सनल गाड़ी करो, बुक करो। हाँ बुकिंग में गाड़ी बहुत 2000 रुपये की होती, महंगी होती है। आप भी तैयारी बना रहे ना आपकी यहाँ, लखनऊ में आपके यहाँ सब आएंगे, दीपावली पर मीटअप होगा वहीं। सही बात, सही बात। ओके ओके हाँ बहुत जानकार है वो। बताएं यश जी कैसे हो? हाँ आपकी दीपावली बना लिया हमने यहाँ, इसीलिए लखनऊ को रखा हमने यहाँ। और सब लोग ज़्यादा दूरी हैं, आप है, हम है, सुनीता बहन है। हम आपसे 40 किलोमीटर है, सुनीता बहन से 70 किलोमीटर है आपसे, लखनऊ से है। जीतू भाई आएगा, सुनीता बहन के लिवाग लेके लखनऊ, तब आएंगे, तब फिर हमारे गांव आएंगे। हाँ चलेंगे जरूर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। सुनीता दी उन्नाव से हैं, उन्नाव से। सबसे पास में आप हम हैं, फिर उसके बाद सुनीता दीदी है, तब फिर जीतू दीदी है, उसी तरह सब लोग मिलते चले आएंगे, पास पास के हैं। आज सुबह यही बात हो रही थी, काफ़ी देर तक सब 3-4 लोग थे यहाँ, ऋतु थी और क्या कहते हैं जीतू थे। हाँ उन्नाव से, उन्नाव पास में ही आपके हैं, हम भी उन्नाव से हैं, आप लखनऊ से हैं, खाली जीतू भाई दूर है। तो जीतू भाई आज बात हुई थी, कह रहा सपना भाई से बात करेंगे, अगर आएंगे वो तो पहले लखनऊ में आएंगे यहाँ, फिर लखनऊ से तब कानपुर आएंगे यहाँ। हाँ उन्नाव पास है। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी आपका। हाँ अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से आप भी आना दीपावली पे हैं। हाँ 35 किलोमीटर। हाँ सब आएंगे आप यहाँ चौक पे, तभी हम ही ने रखा है मीटअप। हाँ सबकी छुट्टी रहती, स्कूल बंद रहते, ऑफिस बंद रहते। सुनीता बहन कह रहे थे अब कि भैया तू जीतू भाई के साथ, अमित भाई के साथ मनाएंगे। हाँ जीतू भाई मान नहीं रहे थे। हाँ फिर सुनीता बहन खुद कहने लगी, हाँ कहने लगी अपनी बहनों के साथ हर बार मनाते हो वहाँ, अब की हमारे साथ मनाना आके। हाँ तब जीतू भाई तैयार हुए। आपसे बात होता आप बोल देना रिजर्वेशन करवाएं। हाँ सपना बहन और जीतू भाई हैं लखनऊ के लिए। हाँ हाँ आज सब बात हो रही थी, आप जीतू ने किया था मैसेज, लेकिन नहीं आ पाए थे। हाँ यही बात हो रही थी। हाँ सुनीता दीदी ने खुद कहा कि आपकी भैया दूज अमित भाई के साथ जीतू के साथ मनाएंगे। हाँ हाँ बोल देना कि रिजर्वेशन कराओ आप लोग लखनऊ के लिए। हैं
चाहे लखनऊ कराएं चाहे कानपुर कराएं, बात वही होगी। हम तब सुनीता बहन सब लोग आएंगे एक साथ हैं आपके यहाँ। दशहरी मैंगो चाहिए था। हाँ, आज सुबह पूरी प्लान बन गई थी यहाँ, तब 12 बज गए, फिर सपना बहन की लाइव शुरू हो गई कि सब लोग उसमें चले गए थे यहाँ। तभी जीतू भाई से कह रहे थे पहले लखनऊ में, जीतू भाई कहने लगे कि अमित भाई चल नहीं पाते हैं। सब लोग लखनऊ आ जाए, फिर लखनऊ कोई गाड़ी कर लेंगे बुक। हाँ, फिर एक साथ सबकी फ़ोटो हो जाएंगी। हाँ हाँ, यही प्लान बना था सुबह। हाँ हाँ ज़रूर है, आप भी आना है। दीपावली के तीसरे दिन है, परेवा होती है दीपावली चौथे दिन है, ज़रूर आना आप लोग। हाँ, दीपावली होती है, परेवा होती है, उसके भैया दूज होती है, भैया दूज के बाद है। इस हिसाब से हमने रखा था कि मीटअप की किसी को दिक्कत ना हो, सबके स्कूल बंद हो सबकी। बुला तो रहे हैं, सबको बुलवाएंगे, सबको इनवाइट करेंगे, सबको कार्ड देंगे। हाँ, कार्ड छपेंगे, ऐसे थोड़ी बुलवाएंगे सबको। हाँ, ज़रूर बुलाएंगे सबको। हाँ, सभी लोग आना है, कार्ड छपेंगे। हाँ, तब फिर हमारे गांव आना आप सब लोग हैं। हाँ, समझ रहे हैं, आपको भी आना है, सबको कार्ड मिलेंगे, ऐसी बात थोड़ी, इन्वाइट करेंगे सबको। आप भी आना है, ऑल फैमिली, पूरी यूट्यूब फैमिली सब। और भी छोटे जो जैसे वो भतीजे वगैरह हमारे हैं, अहम वगैरह हैं, और भी सब लोग हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं, वो अहम है, अनुराग है, समझे अमित भैया? वो दोनों भतीजे आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ, अहम और अनुराग। हाँ, पढ़ने जाते इसलिए टाइम नहीं मिल पाता लाइब्रेरी में आने के लिए। आपको और जीतू भाई को अच्छी तरह जानते हैं, वो सब मिलेंगे वहीं। हमने बताया था कि मीटअप रख रहे हैं लखनऊ में। हाँ, और उसका ना चैनल नाम है आर्टिस्ट अनुराग। हाँ, वो भी सपना बहन की जैसे है। हमारे मामा के लड़के का लड़का लगता है, वो भतीजा दूर से है, सगा भतीजा नहीं मेरा। वो जाता है ना सपना बहन की लाइफ में, तो देखता है मैसेज वैसे सब लोग कितने अच्छे लोग हैं। हाँ, वो सब लोग आएंगे। हाँ, ऐसे करके 8-10 लोग हो जाएंगे। हाँ, वो दोनों भतीजे देखते हैं आप लोगों को। हाँ, जो अहम है भतीजा है वो मतलब ठीक है, वो तो पढ़ने जाता है। ये अनुराग है, मतलब ये नहीं चल पाता, इसलिए इसने पढ़ाई की थी 6-7-8 तक, उसके बाद फिर नहीं की पढ़ाई। वो कहते नहीं दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गए हम।
अनुराग को पैरों में प्रॉब्लम है, जैसे हमको मतलब है। हाँ, हमारे वीडियो लोग कुछ लोग देखते तो नहीं जान पाते हैं कि ये नहीं चल पाते हैं। पैर उसके ख़राब है अनुराग के, जैसे हमें है। हाँ, हमारे इतने वीडियो हैं, हमने किसी वीडियो में नहीं दिखाया कि हम विकलांग, हम नहीं चल पाते हैं। हमने जब चैनल बनाया था तो कसम खाई थी हाँ कि हम मोनेटाइज करने के बाद लोगों को बताएंगे कि हम दिव्यांग हैं, हैंडीकैप हैं। हाँ, हमारे 1000 वीडियो पड़े, किसी वीडियो में नहीं दिखाया हमने हम चल नहीं पाते हैं। अपनी अपनी इच्छा शक्ति होती है ना। नहीं, लोग कहेंगे यार ये विकलांग थे इसलिए लोग उनको सपोर्ट कर दिए, हमारे गांव के लोग कहते हैं, हमारे मित्र लोग कहते हैं। जब मोनेटाइजेशन उसके बाद बताएंगे कि हम सही बात। नहीं, काम होता रहेगा। काम का है, काम तो हम स्टैंड लगा देते, फ़ोन काम करते रहते, हमको लाइन में दिक्कत नहीं होती काम करने। 2 स्टैंड मेरे पास है, मैं एक मशीन पे रखा रहता है, एक कटिंग पे काउंटर पे रखा रहता है। आप बात कर रहे हैं कितनी अच्छी बात है, अपना समय दे करके। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैं आदमी आजकल टाइम कहाँ देता है, किसी के पास टाइम नहीं है। अगर टाइम दे रहा कोई समझो बहुत खास आदमी है तब टाइम दे रहा है के ज़माने में। आजकल सबसे कीमती टाइम है, वही अगर आदमी दे रहा तो बहुत अच्छी बात दे रहा है। तरह तरह के लोग होते हैं। लड़कियों तो लड़कियां, लड़कों को लाइफ में चलाने हम लोगों को दिक्कत होती, पता नहीं क्या दिक्कत होती। हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं फर्जी बहुत लोग आ जाते हैं। ये माला काहे पर रखा, वो टीका काहे कर रखा, चोटी काहे रख रखी है, दाढ़ी क्यों रख रखी। अरे हमारा मन हमको अच्छा लगता है, बस एक से ज्ञान देने वाले आते हैं। बहुत सी लेडीजें हैं, बहन बेटियां हैं, लाइफ में आना चाहें, लेकिन ऐसे कुत्ते लोग होते परेशान कर लेते हैं उनको। हम गलत कमेंट कर करके ये नहीं सोचते अगर हम किसी साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। ये सब बात सोचते रहे लोग। हैं तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, एक से एक अच्छे लोग मिल जाते हैं, एक से एक गलत लोग मिल जाते हैं। जब से आप लोग मिले तब से हम को लगता है कि दुनिया में अभी अच्छाई जिंदा है, लोग अच्छे लोग हैं। हाँ, सही बात।
अभी क्या हो रहा है हामिद भाई, कैसे क्या कर रहे हैं इस समय आप? हमको देख रहे हैं आप, हम काम कर रहे हैं। आप अपने विषय बताएं, आप क्या कर रहे हैं इस समय? ठीक 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 ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक 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 करें। मेरा नाप ले लो, पेन का मजाक नहीं कर रहा, चीजें हैं। पैंट कैसा है, काला कलर का, ब्लू है, अच्छा वो वाला। अबे मतलब सिलवाना है पैंट, आए तुम गए नहीं ना? यही वाला पैंट सिलवाना है, सिलवाना है इसको, मतलब वो करना है। भाई खाएगा लड़का, कब दे दी अभी कर दो, और छोटा करो, छोटे मम्मी का नंबर रखा, बढ़ोगे तो हो गया। इतना करो इतना, ठीक है? जाओ, शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल वाला पैंट सिलवाना है। लो 30 करो, 30 30 करो। 30 छोटी हो जाएगी है। अरे अंकल ये मेरी नाप की है, मैं नाप की थी।
राम सिया राम मुझे दे राम। ये वो करते हो रखो। देखें पुराने कपड़े में करते हैं, नए में नहीं करते। नहीं मुकाए नहीं तो नहीं शांत नए मालूम पड़ती है ना, मालूम नहीं मालूम। पुराने घर में पहनने में हो जाता है। हाँ ये बात होती है। नहीं 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 है डिजाइन कैसे होगा ये? बस नहीं होगी क्या है मैं कई बार कोई थी और तुरंत वो लगा के कल्याणपुर में हाथ हाथ वाली होती है उसको कराओ। हाँ वो मालूम नहीं पड़ती, ये मशीन वाली मालूम पड़ती है। जवाहरलाल स्कूल है वहीं बगल में है। हाँ हाँ उनकी बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। नई शर्ट है, पुरानी होती हम कर देते मशीन वाली, तो घर में पहनने में हो जाती है। वहीं कराओ इसको। पुराना है भाई।
अनुराग अभी अमित भाई आए थे लखनऊ वाले, तुमको पूछ रहे, तुम्हारे विषय में बात कर रहे थे। हमने कहा पता नहीं कहाँ इस समय है। दीपावली में बुलाया है सबको ना, गाँव अपने मीटअप रख रहे हैं एक हम। तुम भी आना उसमें। हाँ, सपना बहन, जीतू भाई, वो सुनीता बहन, अमित भाई, सब लोग आएंगे गाँव। हमने कहा अनुराग को बुलाएंगे, हमको भी बुलाएंगे, सब जगह आ जाए, रोटेशन खत्म होती, समझो। काफ़ी देर से बात हो रही, ऊपर देखो लगी होगी लिस्ट। कमेंट करो अनुराग। राधे राधे राधे। काफ़ी देर से पूछ रहे थे आपको वहाँ। आपके जागरण में गांव बुलवा रहे हैं ना सबको। हाँ, मीटअप होगा आपकी एक। बोलो अनुराग। अच्छा अच्छा अच्छा। वो भाई आए थे ना, जीतू भाई लखनऊ वाले, अमित भाई। हाँ, तुमको पूछ रहे थे। हाँ, काफ़ी देर से बात हो रही थी उनसे। हाँ, दीपावली बाद मीटअप रखा है ना लखनऊ में। है, पहले सब लोग लखनऊ आएंगे, यहाँ फिर गांव आएंगे हमारे यहाँ, वही जागरण में है। तुमको पूछ रहे थे, हमने कहा अहम अनुराग सब मिलेंगे। हाँ, जीतू भाई, अमित भाई, आपको।
कहाँ यार यार
बताएं गेमर जी कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आडी गेमर जी कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपको। हम यूपी उन्नाव जिले से, आप कहाँ से हैं बताएं?
कुशवाहा नहीं है टिकट? अंदर टिकट दिए अभी नहीं, 1 घंटे बाद आना। अब ले गए राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। लखन कहासी हमरे जाना, सुमंदिर सब धनुष समन सिया राम राम।
तेरा ही नाम लिखा, चीर के देखो दिल मेरा तो, पर तेरा ही नाम लिखा, लिखा। सही तो सही बस है। रात में गिरेगा पानी है। ये जो 2-4 लगातार पानी गिर जाएगा ना उसके बाद जमीन हाँ 12 हुए कब 13 संडे हो गया। कल संडे है। संडे भी मिलते ही नहीं है, संडे से चला जाता है 16-15 तारीख के बाद। जुलाई में कम बारिश नहीं हुई है। क्या बोल रहे हो? शर्मा जी को फोन किया, शर्मा जी तबीयत कैसी है, कभी आ और ये वो वाले उनको उठाने लगे बेकार हो जाते ये बस 3 दिन और रखे रहते हम लोग के सड़क उधर भाई जो है शुरू हो गए। शुरू हो गया, अरे वैसे तोड़ फोड़ गए हैं। बोले तो शुरुआत शुरुआत कह दिया कि हटा दो, फूल और तो लगी गए लगभग जो लग गए लोग वाले हटेंगे ना सर, बड़ा फूल लगा रहे अलग से उनको हटा दे रहे फूल लगते हैं ना उसी साइड लगा उस साइड तो सारे लगे हमारे तो उसी साइड लगेंगे सब। हाँ नई साइड लग रहे हैं गार्डन के पास लगा है। लाजी क्या लगा कि नहीं लगा सर? हमने ध्यान नहीं दिया, उस तरफ ध्यान दिया है हमने। उसमें गाड़ी में तो नहीं लगा है। उसमें ही बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। हाँ और क्या फूल लगेगा उसको और होगा। नाला बनेगा। हाँ उसके फूल की नाला बनाएंगे छूट जाएगा। अरे गार्डनिया एक गार्डनिया बहुत वाला हटा रहा है। ना 2025 तक जो समाप्त होते होते हम लोग बदल जाएंगे। सरकारी काम है, कहाँ बंदे पड़े रहे हैं। हाँ लेकिन हो जाए जल्दी हो जाए। हाँ काम होता कारोबार दिन होता रहे। भाई ठेकेदार पैसे मिलेगा उसे लाख दिन लगा दिया लेबर, पैसा नहीं मिला तो उसी में छोड़ देता उतने एक बार। और एक पोल जो है एकदम गार्डनिया है उस सड़क लगा है। गार्डनिया काफी फंसों टूटेंगे सीढ़ी तक गेट के पास टूटेंगे। सरकारी अस्पताल के अंदर साइड लग गया है उस साइड सारा लग गया। अब या बस्ती के अंदर लग गया है, बस्ती के उधर लग गया है मतलब उस पट्टी में सारा लग गया। इस पट्टी में बस गार्डनिया के आगे लगा के नहीं लगा एम्पायर तो चला ही जाएगा। एम्पायर के एम्पायर वाले चले गए, राजा राम चले गए। हम भी बनाओगे तो लिखेंगे मौर्य एम्पायर, ग्रेट मौर्य एम्पायर। और लोग
द ग्रेट मौर्य द ग्रेट मौर्य बस इतना ही लेके बस एम्पायर लिखने को चाहिए एम्पायर लिखने की मौर्य जरूरत द ग्रेट मौर्य अपने ब्रदर वाले पढ़ेंगे आया टेक किया थोड़ी जागरूकता बढ़ी है लोगों में
अमन जी कैसे हो?
कैसे है बताएं? तो उनका मतलब कह रहे
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे लाइव कृष्ण कुशवाहा कॉमेडी चैनल पे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? राम सिया राम, जय जय राम। राम राम। बिट्टू का लेके आएंगे भाई, तो कल आम रखे थे सोने। देखो आम रखे हैं। आज तो बची है लेकिन बड़ा जल्दी जल्दी चला जाता मुझे। और वीडियो डाले उस दिन वाली हाँ? डाले अभी नहीं डाला। डालू क्या कौन सा दिन भाई साहब ऐसे नहीं कुर्ता पजामा ना कपड़ा कहाँ मिलेगा बढ़िया सस्ता? वहीं IT गेट मिल जाएगा रोड के यहाँ। अरे खराब होगा तो फिर शहर चला हो, सस्ता अच्छा पूछे तुमने कभी से बताया? हाँ चले तब तक इनका आप जान पहचान दुकान है कोई? फिर वहाँ शहर चलाओ, शीशा मऊ से है, वहाँ बढ़िया मिलेगा। किराया लग जाएगा। बात तो यही कल्याणपुर में लेना तो क्या क्या कहते हैं, उपासना में है। देखो उपासना साड़ी सेंटर। हाँ उपासना देखें, हाँ वहाँ से ले लेना। वहाँ से ठीक मिल जाएगा। कल्याणपुर में सबसे बढ़िया उपासना क्या मिलता है। हमें थोड़ा प्रेस लगा लिया एक साइड में है, और लगा तो तुम अपना तो शूट कर लो। हाँ लीजिए। कल फिर आम मान लिए, फिर आम 2 रखे रहे यार। देखो देख मैं कर तुम शूट करो, बोला कि लंबा है इसमें तो वो करना पड़ेगा। ऊपर वाला देखिए ऐसे ना। अरे मैं बहुत प्लेयर है सर, जैसे हाँ जैसे क्या एक गेम ना आता हो, जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। दे मैं एक बार खा लीजिए। याद हो गया। हाँ दूसरा वाला बड़ा ही कुछ होता ही है। अरे याद तो करे पहले यार। अभी भी कुछ दिखा दो। ए अब डीजे तो हम नहीं अरे करेंगे मैं ना। अगर मैंने लाइव चला ना, उस पर लाइव बंद करनी पड़ेगी हमको। बंद हाँ कर करिए थोड़ा। चलो तैयार रहते तो चलो हाँ चलो बंद करो। तुम याद करो डायलॉग बढ़िया।